Good evening and welcome. You're watching the Newstrack. I'm Rahul, Kanwal. The one question that's been asked again and again and again since the Mewat mayhem broke out is who are the people who can be seen on top of buildings, on top of mountains, throwing stones at the yatra as it passes on the road below. The Haryana police is looking for them. Everyone in the country is wondering who they are. So we sent our team of reporters to the areas where the riots broke out. I told them to go up on the mountains from where the stones could be flung. Some of those stones being flung caught on camera at that time, and those videos now doing the rounds on social media. Our investigative reporters were shocked to find that many of the rioters and their family members are actually hiding on the hills. They're hiding on the hills. They have beds, they have tarpaulins, they've made out small shelters in which they're hiding. They keep an eye on the police as they come in, they run away. Remember, these are rioters the Haryana police is looking for. Everyone wants to get to them and find out what happened and why. The police so far hasn't been able to find them. But India Today's crack team of special investigative journalists have been able to hunt down some of the rioters who were flinging stones from mountaintops, flinging stones from the top of buildings. They have been caught in this big India Today exclusive that's coming up for the first time on the Newstrack. As cops hunt for the communal mob, India Today reaches rioters' hideout. Up in the hills, just outside New, from where the first stones flew. Join us where nobody dares to go. From firing spot to hiding place. Rioters' Hill hideout revealed. Big focus on Newstrack. Our investigative reporters clearly on a roll this week. They've found now the hideout of several of these rioters. The Haryana police not able to get there, but India Today has reached their hideout. We will take you to their hilltop hideouts. Before that, here's a look at the headlines today. Delhi's services bill passed in the Lok Sabha. Home Minister Amit Shah accuses the opposition of uniting on the issue to try and defeat Modi in 2024. AAP MP Sushil Kumar Rinku suspended for the entire session. It's a big India Today impact. FIR filed against 3 social media influencers after our investigation exposed the online hate in the new riots. 20 hate video links are being traced for provoking these riots. Fresh clashes erupt in Manipur. Forces and Meitei protesters clash in Bishnupur. Chili spray, bullets and tear gas are fired. There's a massive confrontation taking place here. The bullets being fired. This is the massive confrontation taking place. Stone pelting. Allahabad High Court gives the nod for ASI survey at the Gyanvyapi Mosque complex. Muslim side moves the Supreme Court to challenge the order. Fresh trouble for wrestling chief and BJP MP Brij Bhushan Singh. Green Court orders probe against him in the illegal sand mining case. India Today has accessed videos that show how stones were pelted from the hills surrounding the Nalhar Mahadev temple. Now, on the Newstrack, we're going to take you up those hills just outside Nuh, from where the stones were being flung. From the firing spot
to the hiding place. India today goes where nobody else has dared to go. We will reveal the current hideout of the rioters. This is where the Haryana police should be tonight to catch the rioters who are hiding in the hills. The Haryana police hasn't got there, but Mohammad Hizbullah from the India Today Special Investigation Team and Arvind Ojha, our crime editor, managed to reach the rioters' hill hideout. This is a big India Today exclusive. Gunshots pierced through. Hails of stones came down like missiles. Attackers took a vantage point in the Aravali hills above as the VHP's Braj Mandal Yatra passed on its route below on Monday in Haryana's New. India Today on an arduous journey to find out who seized the towering peaks to rain down bullets and stones on the July 31 procession. The warm hues of the rising sun, the lush greenery, the ridges, the gentle breeze, and the chirping birds told us a hidden story. Men you see sleeping here aren't on leisurely excursions. We discovered that they have transformed these hills around Nu into a strategic cover. Local villagers escaping arrests, along with suspected rioters. Their face covered, these young men sitting with fellow villagers explained to us why they are staying put in these vast, rugged terrains. ये आप लोग इतने मतलब पहाड़ों में क्यों छुपे हुए हैं? भाई पुलिस के डर के मारे छुपे पड़े हैं पहाड़ों में। क्यों ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस के डर के मारे छुपे हुए हैं? पुलिस आती है उठा ले जाते हैं, ये भी ना पूछती तुम गए वहाँ ना गए, आती है उठा ले। कहाँ? गांव में आती है हमारे में। तो कहाँ नहीं गए मतलब? जो ये जो ये दंगाई आए थे ये। अच्छा अच्छा। जो वहाँ चला गया वो भी, जो ना गए वो भी, सब अपने इधर उधर हैं। नहीं तो पूरे गांव के कितने, सारे गांव के लोग पहाड़ों में? गाँव में पड़ा है जो ये यहाँ पे गाँव में है जो। अच्छा। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया पुलिस के डर की वजह से। तो पूरे पहाड़ों में कितने लोग हैं अभी? तकरीबन होंगे 500 आदमी। 500 लोग पूरे पहाड़ों में हैं? हाँ। For these residents of Nu, the surrounding Aravali range is serving as their mountain refuge. In response to an ever-looming spectre of arrests and police crackdown in the aftermath of Monday's mayhem in the district. But the new resident also admitted that suspected rioters have mingled with innocent civilians taking shelter in the hills over fears of mass arrests. Listen in to him again. जो वहाँ चला गया वो भी, जो ना गए वो भी, सब अपने इधर उधर हैं। पुलिस आती है उठा ले जाते हैं, ये भी ना पूछती तुम गए वहाँ ना गए, आती है उठा ले। In the FIR, police have mentioned that some of the locals descended from the mountains, carrying illegal arms, lathis and stones to disrupt religious service at a local temple. Videos of purported gunshots and stones hurled from the same heights on Monday have also surfaced. Vigilant gazes cast downward, eyes trained on the lands below. The men spotted a speeding convoy of police cars from afar.
नहीं तो फिर आप लोग पहाड़ों में ही क्यों आए, मतलब कहीं और भी जा सकते थे? इस वजह से है, जैसे अभी पुलिस की गाड़ी जा रही है, यहाँ से हमें पता पड़ जाते है गाड़ी आ रही है, अपने साइड में हो जाते हैं। 2-3 बस देखो ये कितनी गाड़ी जा रही है, ये 10-12 गाड़ी जा रही है, वो जा रही है, बस है जहाँ मन मारे वही छापा मार रहे हैं। अच्छा, ये पुलिस की गाड़ियाँ जा रही जो वाइट बस जाती है? 3-4 बस हैं, 7-8 गाड़ी हैं, इसी के डर की वजह से डूब का पड़ा है यहाँ पे। For these people, it's their makeshift encampment. Black tarpaulin sheets lay casually, ready to be used as cover for the night. Like ants in a procession, more villagers can be seen ascending the hills. Their silhouettes grew more defined with each step. यहाँ बेसिकली जितने भी पहाड़ों में जो लोग हैं वो सब के सब आप ही के गांव के हैं? नहीं, हमारे गांव के भी हैं, साथ में ये गांव है, अगला गांव में, हर गांव में से जैसे भी कहीं से 10 हैं, कहीं से 5 ऐसे चढ़ जाते हैं, डर की वजह से, जैसे कहीं का भी हिर लगता है। तो ये कब से आप लोग चढ़े हुए हैं पहाड़ों पे? यहाँ में होगा तो तीसरा दिन है आज। नहीं तो इसके ऊपर भी और लोग बैठे हुए हैं? जहाँ तक ये हर आदमी अपना बचाव करेगा और ऊपर चले जाएंगे, अगर जब भी और ऊपर चढ़ गए भैया पकड़ के ले जाएंगे, आखिरी हथियारी और कुछ नहीं। तो क्या इसके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं क्या? हाँ, बैठे हैं, जगह जगह बैठ जाते हैं। अब जैसे यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठ जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। हाँ, अगर पुलिस ना है तो अपने यहीं बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं। We now investigate in the violence-hit villages in the lap of the Aravalis below. Rafiq is president of Noos Sarpanch Association. He admitted that young men from his village did participate in looting and rioting, and that they all have fled. 5-6-7 बच्चे हैं मेरे गांव में, नहीं है मेरे गांव के, हैं मेरे गांव के और एक अच्छी नहीं है कि बच्चे थे। मैं ऐसा नहीं तुमको रोकूंगा, तुम कहूँगा नहीं, मैं पैर भी करूँगा, आगे चल के दूंगा उनको। ये 5-7 लूटपाट में या दंगे हैं? लूटपाट में या दंगे? नहीं, इसमें झगड़े में हैं वो लोग। अभी हैं, मुलाकात की हो सकती है ऐसे ही गाँव में? नहीं हो सकती, वो तो निकल दिए सब। किस उम्र के बच्चे हैं वो? तो उनकी उम्र 25-25, 20-20 साल की, 18 साल की, 22 साल की, इस तरीके से। बाइक के जो मुश्किल आई हुई है, हाँ, उनमें मेरे गांव के 2-3 बच्चे, जो चीज़ है 2-3 बच्चे बाइक में हैं, बाकी दंगे में 5-6-7 बच्चे हैं जो मेरे गांव में। A local eyewitness to the Monday rioting, Irfan claimed some rioters arrived from Rajasthan on the Yatra day, some from within New district. तो उनकी गाड़ी में टक्कर मारी थी पिकअप से। किसने मारी? वो पिकअप गाड़ी आई थी, वहाँ 7 या 8 गाड़ी थी, फिरोजपुर साइड से आई थी वो, राजस्थान से। तो ये लोग कौन लोग थे वो सारे? यहाँ कब थे वो लोग? वो तो बाद में आए, जहाँ पे जब झगड़ा हुआ ना, वो आए हैं, तुरंत झगड़ा स्टार्ट हो गया, उससे पहले नहीं आए थे वो। इसी टे पॉइंट पर आकर के उन्होंने उनकी गाड़ी वाड़ी में टक्कर मारी। तो वाले जो उनकी गाड़ी में टक्कर मारी थी पिकअप से। Culpability rests heavy on both sides. Not all hiding in these hills could be culprits. Not all could be innocent either. A challenge for the Haryana police to sift out the guilty from the mass of villagers sheltering in the Aravali peaks. A report by Mohammad Hizbullah for India Today's Special Investigation Team. When I heard this story in the morning, I was quite shocked that some of the rioters and their family members are actually hiding in these hills. And I wonder why the Haryana police can't go and pick them up. You saw those convoys or those vehicles, the Haryana police coming, the rioters see them, they inform each other, they run away. It is mountainous terrain, so it's not very easy to move around, but surely if the India Today crews can get to these mountain tops, then so can Mr. Khattar's police. Why aren't they doing their job?
I want to go across at this moment to Arvind Ojha, a crime editor. Mohammad Hizbullah is from the India Today Special Investigation Team. He's the one who went up first to do this. I want to go across to Arvind because he was there in the evening on these mountaintops speaking to these people. The biggest question, of course, is, Arvind, अगर इंडिया टुडे की क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस टीम इन पहाड़ों पे पहुंच सकती है, वो बता रहे हैं कि हमें मालूम है दंगाई कौन है, यहीं पे हैं, बाकी परिवार वाले भी आए हुए हैं, हम लोग यहाँ पे छिपे हैं पहाड़ों के ऊपर, तो यहाँ पे तो पुलिस की टीम होनी चाहिए. पुलिस कहाँ पे है? हम लोग तो वहाँ पे, पुलिस कहाँ है? नहीं, अब राहुल ऐसा लगता है कि अब जब हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की ये खुलासा देखने के बाद अब बहुत मुमकिन है कि हरियाणा पुलिस की आंख खुले और जो कल पुलिस इन पहाड़ों पर जाए. लेकिन अभी तक जो तमाम विलेज हैं उन विलेज में रेड हो रही है. यहाँ ये समझने वाली बात होगी कि जो जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ से वॉयलेंस ज़्यादा स्पीड पकड़ा, लेकिन यहाँ जैसे ही नूह में वॉयलेंस की शुरुआत होती है यहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दायरे में वॉयलेंस शुरू हो जाती है. तो वो कैसे? वो इन्हीं पहाड़ों पर जो लोग अभी छुपे हुए हैं, जिनको इंडिया टुडे ने एक्सपोज किया है, इनमें से ज़्यादातर लोग वही हैं. क्योंकि कुछ लोग राइटिंग में शामिल थे, वो दंगे कर रहे थे, तो कुछ लोग इस राइटिंग के बहाने लूटपाट कर रहे थे, दुकानों में तोड़ फोड़ कर रहे थे, गाड़ियों में आग लगा रहे थे. अब चूंकि हरियाणा पुलिस वो रेड कर रही है तो उसके बाद ये लोग हिल्स एरिया में शेल्टर लेकर छुपे हुए हैं. हम लोग शाम के वक्त कई ऐसे हिल्स एरिया में गए जहां पर 5 से 6 विलेज के लोग पहाड़ों पर सुबह से शाम तक छुपे हुए हैं और उनको बाकायदा खाना पहुंचाने के लिए लोग जा रहे हैं, पानी पहुंचाने के लिए भी लोग जा रहे हैं. जो जहां नल्हड़ मंदिर जहां से राइटिंग की शुरुआत हुई थी, हिंसा की शुरुआत हुई थी, वहां से भी हिल्स एरिया से ही फायरिंग हो रही थी. तो बहुत मुमकिन है कि हरियाणा पुलिस उनको तलाश रही है, उन दंगाइयों को जो उन्हें नहीं मिल रहे हैं, जो इंडिया टुडे की टीम ने खोज निकाला है. बहुत मुमकिन है कि कल से इन हिल्स एरिया में हरियाणा पुलिस का सर्च ऑपरेशन शुरू हो. राहुल, I don't know whether to laugh or cry, to pat our team for the fantastic job they've done, or just to tear my hair apart at the sheer incompetence of the Haryana police. Mohammad Hizbullah was the first journalist to actually go up these hills, because when we were having this conversation yesterday, हमने बोला कि जहाँ से ये पत्थर आए वहाँ जाके और देखते हैं कि क्या होगा. और जब आप ऊपर पहुँचे हिजबुल्लाह, आपने देखा कि वहाँ पे तो कई सारे दंगाई है, उनके परिवार वाले और कुछ और गांव वाले डर के मारे छिपे हुए हैं. ये तो बहुत शॉकिंग है. आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए हमारे दर्शकों को, आप कैसे ऊपर पहुँचे, वहाँ पे आपने दरअसल क्या देखा इन पहाड़ों पे, और जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो हरियाणा पुलिस कहाँ है? देखिए, हरियाणा पुलिस ऊपर इसलिए नहीं जा सकती है कि उसको जाने में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जब वो हरियाणा पुलिस जब जाएगी उनको पकड़ने, तो वो पहाड़ पे एक हाइट पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ से वो पत्थरबाजी करने का एक डर है हरियाणा पुलिस को. इसलिए हरियाणा पुलिस ज़्यादातर डर है का क्या मतलब है? दे कैन गो आर्म्ड एंड स्टफ, दे कैन गो प्रॉपर्ली इक्विप्ड फॉर दिस. नहीं, जब वो आप नीचे से आप फायरिंग भी करें या कुछ भी करें, बट वो ऊपर से जब पत्थर आ रहा होता तो आपको बचना पड़े, पुलिस को बचना पड़ता है. तो पुलिस इस वजह से थोड़ी सी अभी पहाड़ों पे जाने से हेजिटेट कर रही है, बट गाँव में वो अच्छे से रेड करी. जब मैं सुबह में पहुँचा वहाँ, सुबह 6 बजे के आसपास जब मैंने पहाड़ों में पहुँचा, तो मैंने ऑलरेडी पहले मैंने किसी से बात कर रखी थी कि मुझे आना है, आप लोगों से मिलना है. तो वहाँ कम से कम मैंने देखा कि लाइन से जो पहाड़े हैं वहाँ पे 50-60 लोग 70 लोग ऐसे आ रहे हैं और जा रहे हैं. छोटे छोटे पहाड़ों पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं. जब मैं उनसे बात की कि आप लोग क्यों इकट्ठे हैं, तो उनका ये कहना था कि हमें डर है कि कहीं रात को जब हम घर में सो रहे होंगे तो हमें पुलिस ना उठा के लेके जाए. मैंने जब पूछा कि आपने किया क्या, कि पुलिस क्यों उठा के ले जा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए इसमें सब ने कुछ नहीं किया, बट कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जो शामिल थे उसमें. तो अब लेकिन पुलिस अब ये समझ नहीं रही है कि कौन शामिल है कौन नहीं थे. पुलिस सबको उठा रही है, इसलिए हम लोग यहाँ छुपे हुए हैं. और वहीं पे उनका खाना पीना चाय वगैरह सब कुछ वहीं पे. वहाँ पे उन्होंने एक तरीके से कॉट उन्होंने लगा कर रखा हुआ है प्रॉपर. उन्होंने वहाँ पे टेंट लगा हुआ है, गद्दे लगे हुए हैं, सब वहीं पे सो रहे होते हैं. तो और ये इनके गाँव विलेज से ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, मुश्किल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सब अपने अपने विलेजों से 1 से 2 किलो के डिस्टेंस पे किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोग पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं. Okay, I'm going to come back to you in just a moment, because India Today's Special Investigations team has been setting the news agenda through this week. We were the first to expose the social media warriors who instigated hate and violence online. One of the
key persona is Bittu Bajrangi. He is in charge of the Bajrang force and was on the ground in New when the clashes erupted. He's also the one who made the most incendiary videos threatening to beat people up, including wanting to fire. India Today is the only news channel that's been able to track Bittu Bajrangi down, and he's admitted that members in the yatra were carrying weapons. Preparing the battleground online. His unchecked aggression on social media foreshadowed Monday's mayhem in Haryana's New. Bittu Bajrangi streamed multiple live videos loaded with provocative messaging as he made his way to the VHP's Braj Mandal Yatra on Monday. India Today has tracked down this provocator. A self-anointed cow vigilante, a leader of a self-anointed Bajrang force. A man named in at least 4 cases, the latest linked to his role at New on Monday. Earlier, he stood accused of inciting communal riots based in Faridabad on the outskirts of the national capital. Bittu Bajrangi sounded unapologetic. He pleaded not guilty. The man in his 50s sought to project the VHP's yatra as a peaceful march. He defended the swords and guns carried by participants as ritual arms. जो एक आध गन्स होंगी भी तो वो लाइसेंस की हैं, अवैध नहीं है। और तलवार हमारी क्या होती है, पूजा करने वाली होती है। ये तलवार हमारी शादी ब्याह वाली होती है, काटने मारने वाली नहीं होती। In the same breath though, Bittu Bajrangi advocated iron-fisted methods against the other side, calling them terrorists. ये आतताई जिम्मेदार है, जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया, और वो आतताइयों पे योगी सरकार की तरह उनके घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए, और मैं तो कहूँ उनका अनकाउंटर भी होना चाहिए। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर। Birds of a feather flock together. Monu Manesar, another notorious cow vigilante, another provocator of the New clashes. हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। Manesar's video announcement about attending Monday's yatra believed to have stirred passions. और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। He didn't participate in the event, but rumors about his alleged presence apparently provoked the other side of the communal divide. Bittu Bajrangi revealed he met Monu Manesar barely a month ago. मोनू मानेसर को जानते हैं? कभी उनसे आपकी बात हुई, मुलाकात हुई हो? हाँ जी जानते हैं, अपना गो भक्त है। आखिरी बार कब बात? आखिरी बात हो गया, 1 महीना हो गया। एक सम्मेलन था, वहाँ पर उनसे बात हुई थी। A classic case of online riot tribes becoming real-life violence. New violence has again brought spotlight on hate mongers. India Today tracked down Bittu Bajrangi, whose hate speech had gone viral on 31st of July, which many believe ultimately led to violence in Mewat area. In fact, he admitted on a camera that he had met fugitive Monu Manesar just a month back and added that there were swords and guns in Shobha Yatra. Unfazed by allegations, clearly Bittu Bajrangi has no fear for law. With Alok Das, this is Rahul Gautam reporting for India Today. So far, 93 FIRs have been filed across 5 districts of Haryana. Hundreds have been arrested for the violence and the clashes. How did the violence begin? Who started the fight? Who threw the first stone? That is what hasn't been established so far. What you have are bullets being fired from both sides, those who took out the yatra, those who were attacking from the hills. What is not understood at this moment is who opened the fire. That's something that is being probed. In the meanwhile, India Today has accessed 3 videos that capture some of the key moments of the New nightmare. Arvind Ojha with these details. ये पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का ये क्लियर करा दिया। A glimpse of the sheer terror that was unleashed on Yatris on July 31st in Haryana's New.
India Today has accessed 3 videos that show you how the new nightmare really unfolded. With a mob armed to the teeth, ambushed locals from all sides at a Shiv temple. The first video, shot by a terrified Yatri, shows cops armed with AK-56 aiming for the hills. People are scrambling on the road for cover as the sound of gunfire can be heard. Cops, however, dressed in civil clothes, hold back from firing. ये देखो भाई फायरिंग होते हुए ये पहाड़ों पे बैठे भाई फायरिंग कर रहे थे हमारे. Another video shot by a local shows everyone hiding behind vehicles as the bullet train continues. Unarmed cops can be seen also taking cover, helpless, and shows you how completely unprepared they were for the ambush from the hills. ये देखो भाई फायरिंग होते हुए ये पहाड़ों पे बैठे भाई फायरिंग कर रहे थे हमारे. The armed mob, clearly at a strategically higher location, manages to fire non-stop at Yatris, with a clear aim of ensuring maximum casualties. ये देखो भाई फायरिंग. The next video is from inside the temple. There is no shelter, no place to run, no place to hide for terrified Yatris. One of them can be even heard asking what are the cops doing. ये पुलिस कर क्या रही है? पुलिस का क्लियर करा दिया. Police officials with bulletproof vests can be seen ushering people inside to protect them from the spray of bullets raining on them. Smoke can be seen billowing out of areas close to the temple, and dozens of people can be seen standing in the Shiv temple with nowhere to go. These videos on India Today answer the one question India has been asking. Who started the riot? Who opened fire first? The rioters who stood strategically atop a hill and fired non-stop at innocent Yatris have now been arrested. क्यों आपने आगजनी की घटनाओं को दिया? नहीं सर, हमें सोते लाए. इसमें हम ना जाए सोते उनको 5 बजे उठा के लाए हैं सर. ये 5 बजे सुबह वो सोते हैं, वो उठा के लाए हैं. कहीं सीसीटीवी फुटेज मिले, हमारा कोई रोल मिले, तब तो हम गुनहगार हैं. बाजार में नहीं थे. बाजार में नहीं थे, लेकिन आप सबके ऊपर आरोप है कि आपने आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया था. नहीं दिया जाए. These videos tell a story of manufactured terror, of how the riots that broke out on July 31st and August 1st was pre-planned, motivated and completely orchestrated to spread unrest. With Arvind Ojha and Sushant Mehra, Bureau Report, India Today. Joining me now on this broadcast, senior Congress leader from Haryana, Deepinder Singh Hooda, Member of Parliament in the Rajya Sabha. We've got Jawahar Yadav, spokesperson in the Chief Minister's office. In Haryana, Shri Raj Nair represents the Vishva Hindu Parishad. Vikram Singh is with us, former Director General of Police in Uttar Pradesh. I want to go across to Vikramji first. You've seen this investigation, and on the one side, I am delighted that our correspondents showed the kind of enterprise they did. They climbed up these mountains. They were able to find some of the rioters, their family members on these hills. They're hiding from the police. And that is really high quality enterprise journalism. At the same time, Dr. Singh, I am astonished that what is obvious to a journalist doesn't seem to be as obvious to the Haryana police, who should really be swarming the hills right above where the riots took place. 150, 200 Haryana's top police personnel, the best armed, the best equipped police personnel should be on those hills right now. Why are they not there, and how is India Today there? Rahul ji, good evening. Congratulations to you, your channel, your gallant reporters who have gone to the scene of crime and the rioting unescorted and unarmed. They have brought the bitter truth. What you are analyzing is the consequence of the conspiracy and
the stress and the strains and also the tension that was building up for the last 15 days. The causes are invariably economics. The cow slaughter, the cyber crime, the crackdown by the Haryana police on the cyber crime, and having the raids on no fewer than 128 locations by the SP New, but that was on 28th of April. The consequences and the fallout, because in a very great measure, cyber crime also is a major contribution to the economics of the area, as also other nefarious and undesirable activities. Now the presence of the police and also the presence, you've shown in your program, the likes of Bittu, Bajrangi, Monu Manesar, Ehsan Mewati and others. They were vitriolic. They were, in fact, on the social media and indulging in hate speech of the worst kind. I cannot repeat what they have said. But yes, I would have been very happy if there was intervention around the 20th of July. No intervention, no preventive arrests, no action taken as per the police protocol of patrolling, preventive arrests, preventive action, action under 107, 116 of the CRPC, and recovery of all arms, licensed and unlicensed. As also area domination, presence on the rooftops through drone technology. We have the technology to surveillance all the rooftops through drones, and also physically also nothing like this was done. And to escort a procession under these stressful circumstances, I salute the Haryana police for the follow-up, but I fault them for what they did not do earlier to 31st of July. No, but even right now, sir, if it's so easy to establish, we spoke to a Sarpanch, he knows who the boys are, we go up the hill, some of the rioters are there, their family members are there. I mean, this is quite obvious saluting and basic investigation. The Haryana police should have been there, so I don't see what you're complimenting them for. I would say that the follow-up, yes, they were caught on the wrong foot. I admit they were caught on the wrong foot, Rahul. They were also caught on the wrong foot, not because they just have to monitor the social media and see, and everything is there. They just have to see your channel and everything is out. It is not rocket science to understand who are the main villains in the group. But I would say that after taking 3 casualties and so many casualties biting the bullet, yes, they have given a befitting reply. I would have been very happy if this, even in a scale of 1:10, 1 out of 10 would have happened before 31st. That did not happen. And that is where the horrible fault line is. That is where the horrible fault line is. You have exposed all the accused. This was the job of the police, not of your channel or of your reporters, who in fact took a very calculated risk and had gone to the scene of occurrence. But yes, I would say there's a lot to be done, and the roadmap should incorporate no hate speech. Those who indulge in hate speech and arrange for the firearms, their place is behind bars under the NSA and the UAPA. Okay, thank you very much, Dr. Singh, for joining us. Arvind Oja is still with us. Arvind, the biggest question is, pehli goli kisne chalai? Where did the first fire come from? Because we've seen this whole VHP, Bajrang Dal lot, they're firing in the air, throwing stones. We've now captured the rioters on the hills, in the buildings, they are throwing stones at the yatra below. How did this start? What has the investigation shown so far? नहीं, देखिए, इंडिया टुडे ने एक्सेस किया है वो एफआईआर, हालांकि काफ़ी एफआईआर फाइल्ड हुई है, लेकिन वो एफआईआर जहां से शोभा यात्रा शुरू हो रही थी, नलड़ का मंदिर, ये एफआईआर जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उन्होंने फाइल की है। और एफआईआर के मुताबिक जैसे ही शोभा यात्रा शुरू होती है, सामने की तरफ से 600 से 700 की भीड़ जो मॉब थी वो शोभा यात्रा की तरफ बढ़ती है। पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है। उसके बाद जो हिल्स एरिया है, उस हिल्स एरिया से फायरिंग शुरू हो जाती है, स्टोन पेल्टिंग शुरू हो जाती है और पेट्रोल बम वो फेंके जाते हैं। साथ ही साथ जो रिलीजियस स्लोगन है वो मॉब लगाती है। और उसके बाद जो विजुअल्स हैं वो इंडिया टुडे ने एक्सेस किया कि किस तरह से फायरिंग हो रही है। जो बजरंग दल और वीएचपी की तरफ से कुछ लोग थे जिनके पास लाइसेंसी वेपन्स थे, उन्होंने भी रिटेलिएट करने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर जो स्थिति थी उतनी ख़राब थी कि जो विजुअल हमने एक्सेस किया इंडिया टुडे ने, उसमें पुलिस वाले भी गाड़ी की आड़ में छुपते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरा जो हिल्स एरिया था, उस हिल्स एरिया से वो फायरिंग हो रही थी। और जैसा मोहम्मद हिजबुल्लाह ने कहा, राहुल, यहाँ पर जो MOS है, जो मोडस ऑपरेंडी है, इंडिया टुडे ने पहले भी साइबर को लेकर, क्रिमिनल को लेकर खुलासा किया था। यहाँ मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल जब पुलिस की रेड होती है तो पहाड़ पे छिपते हैं, और यहाँ इस मामले में
2 दिन से पहाड़ पर जो राइटर्स हैं वो छुपे हुए हैं। इंडिया टुडे की टीम उनके पास जाती है, उनको एक्सपोज करती है, लेकिन हरियाणा पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो हरियाणा पुलिस को यह जानकारी नहीं है कि जो राइटर्स हैं जिन्होंने लूटपाट की वो हिल्स एरिया में छुपे हुए हैं। और जो दूसरी बड़ी बात यह है कि किस तरीके से वो वहाँ पर लगातार उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पुलिस रेड हो रही है, पुलिस आ रही है, कब आ रही है, कब जा रही है, ये हर इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है। Okay, Arvind Oja, thank you for joining us. I want to go across to Jawahar Yadav, spokesperson in the Haryana BJP, officer on special duty to Chief Minister Khattar. यादव साहब, ये इंडिया टुडे की दिलेर इन्वेस्टिगेशन दिखाती है कि कई सारे दंगाइये, उनके परिवार वाले जहाँ पे दंगा हुआ उसके नज़दीक पहाड़ों पे छिपे हुए हैं। ये अब सच पूरे देश के सामने है। हमारे ड्रोन कैमराज में, हमारे स्टिंग कैमराज में, हमारे ओपन कैमराज, तीनों तरह के कैमराज पे कैप्चर है। सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि अगर हमारी जो खुफिया जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स हैं, उनकी टीम वहाँ पहुँच सकती है, तो सर आपकी पुलिस क्यों नहीं पहुँच पाई है? अब तक ये दंगाइये खुले क्यों घूम रहे? नहीं, देखिए, आपकी बात कुछ हद तक ठीक होगी, पूर्णतः ठीक नहीं है। पहला दंगा ऐसा है, देश का दंगा नहीं होना चाहिए था। दंगे से पूर्व हमने 1000 पुलिसकर्मी वहां भेजे अन्य स्टेट से, जिलों से, कि जिससे एक एहतियात के तौर पर कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके बाद भी कांग्रेस का पूर्व सुनियोजित और साइबर क्राइम करने वाले, ये सब ने मिलकर उसको इतना किया कि उसमें हमारी उस समय व्यवस्था खराब हुई। परंतु उसके बाद भी देश के दंगों के इतिहास में ये पहली घटना है जिसपे तुरंत कुछ घंटों बाद काबू पा लिया गया। उसके बाद आप ये कहते हैं कि पुलिस ने कार्य नहीं किया। 176 लोगों को अरेस्ट किया है, 93 एफआईआर हो चुकी है। धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं कहता हूं, आज मेरे मित्र और छोटे भाई बैठे हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी, इनकी पार्टी के नेताओं ने ऐसे बयान दिए और ये कहा गया कि कुछ लोगों को हम प्याज की तरह फोड़ देंगे। उस मामन खान के खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की? हमारे लिए तो मजबूरी ये थी कि वो जो बयान दिया गया था वो विधानसभा में दिया गया था, परंतु इन तो पार्टी के नेता थे। और आज एक और मजेदार चीज बताता हूं। आप पॉलिटिक्स को एक मिनट किनारे कीजिए ना सर। मैं तो आपसे लॉ एंड ऑर्डर, जवाहर जी, मैं आपसे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछ रहा हूं। आप मेरा सवाल विनम्रता से मेरा सवाल सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिए। पॉलिटिक्स बाद में करते हैं। इस वक्त नू में कुछ पहाड़ों पे दंगाइये छिपे हुए हैं। इंडिया टुडे और आज तक के कैमरे ने उन दंगाइयों को कैप्चर किया है। वो वहाँ पे पूरा ठिकाना बनाए बैठे हैं, तारपुलिन भी है, पलंग भी है, चाय पानी उनका वहाँ पे चल रहा है। पुलिस आती है, पुलिस को आता देखते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल जवाहर साहब आपसे ये है, आप ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हैं खट्टर साहब के, अब तक आपकी पुलिस ने दंगाइयों के ठिकानों पर छापे क्यों नहीं मारे हैं सर? नहीं, आपको मैं भी इतनी आग्रह से और निवेदन से कहता हूं, आपका ये कहना कि अब तक पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की है, अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की होती तो 176 लोग अरेस्ट नहीं होते। इसके अलावा 126 लोग और हैं जिनको एहतियात के तौर पर पकड़ा हुआ है, यानी कि 176 लोग हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं और 126 लोग हैं जो एहतियात के तौर पर पकड़े हुए हैं, जिन पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यानी कि पुलिस तो अपना काम कर रही है। अब आपका कहना है ये है कि जहां पर आप पहुंचे वहां पुलिस क्यों नहीं पहुंची, आपका सवाल ये है। हम इस पे कदम बाय कदम बढ़ रहे हैं और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके जिम्मेवार चैनल है, कि एक भी अपराधी किसी भी कीमत पर छूटेगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी भी प्रकार की घटना हो। हम संप्रदाय और समुदाय देखकर कानून की वो डंडा नहीं चलाते। जो भी अपराधी है, जिसने भी कोई गुनाह किया होगा, किसी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। और ये मैं खुद कहता हूं कि एक समय बाद पुलिस ने बहुत जल्दी ऐसे सांप्रदायिक दंगों को संभाला। फिर मैं आप कहेंगे राजनीति नहीं की है, मैंने कुछ घटनाएं अपनी आंखों से देखी है। मैं नई दिल्ली में रहता था, 1984 मेरी आंखों के सामने हुआ। 3 दिन पुलिस को कंट्रोल करने में मेहनत करनी पड़ी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सीआईडी की रिपोर्ट आई, हमने उसको इंडिया टुडे पे दिखाया। आपने देखा होगा, अगर आप स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं, और आपको करना भी चाहिए क्योंकि आपके डायरेक्ट का मामला है। उसमें कहा कि 8-10 दिन पहले हमने स्थानीय प्रशासन को और राज्य की पुलिस को ये जानकारी दी थी कि इस तरह का कम्युनल दंगा हो सकता है, मोबिलाइजेशन चल रही है, ये बड़ा खतरनाक है। और 2-3 दिन पहले तो खुलेआम
सोशल मीडिया पर बाकायदा पब्लिक में वीडियो पोस्ट किए जा रहे थे। और जब ये दंगा हुआ शुरुआत में, आपके होमगार्ड वहां पे तैनात थे, रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ी 2 किलोमीटर दूर थी, उसको किसी ने डिप्लॉय नहीं किया। बगैर हथियारों के होमगार्ड, नॉट इवन आर्म्ड पुलिस, ये कैसे हो सकता है? आप तैयार क्यों नहीं थे 10 दिन पहले? अगर सीआईडी ने बताया कि दंगा हो सकता है, खतरनाक स्थिति है, तैयारी क्यों नहीं की आपने अच्छे से? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको संशोधित करूंगा। होमगार्ड नहीं थे, 1000 पुलिसकर्मी अन्य जिलों से मेवात में गए थे, इसी घटना को ध्यान में रखते हुए कि इसी एहतियात को बरतने के लिए कि वहां कोई दुर्घटना घट सकती है। पर मैं फिर कह रहा हूं, वो दुर्घटना इतनी प्लानिंग थी, कहीं ना कहीं कोई चूक तो हुई है, तभी ये दुर्घटना घटी है। परंतु उसका मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ रिटायर्ड डीजीपी भी बैठे हैं उत्तर प्रदेश के, कि ऐसी सांप्रदायिक घटना को जितनी जल्दी हरियाणा के पुलिस के कर्मचारियों ने, सीआरपीएफ ने, आरएएफ ने कंट्रोल किया है, और सबसे तेजी से जो केंद्रीय एजेंसी भी अगर कहीं पहुंची है तो मुझे लगता है वो नूह में पहुंची है। और मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि एक भी गुनाहगार किसी भी कीमत पर जो ऐसी घटनाओं में शामिल था, चाहे वो सर, मुझे तो आप हर मामले में लेट ही चलते हुए दिख रहे हैं। किसी को भी, जब मोबिलाइजेशन हुई तब आपने रोका नहीं, जब सोशल मीडिया पे वीडियो आए तब आप लोग जगे नहीं, जब पहाड़ों पे दंगाई छिपे हुए हैं वहां आप पहुंचे नहीं। सब जगह तो हम आपसे पहले पहुंच रहे हैं, और आपकी पुलिस को आगे होना चाहिए, पत्रकारों को कवर करना चाहिए कि पुलिस क्या कर रही है। 176 लोग, अरे सर 176 लोग कहां से पकड़े हैं, और बाकी जिनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो कहां से पकड़े? तो सर, इनको तो प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना चाहिए ना। जैसे बिट्टू बजरंगी का मैं एग्जांपल देता हूं, जवाहर जी, मैं बिट्टू बजरंगी का एग्जांपल देता हूं। जब उसने ये भड़काऊ बयान दिया, उसी टाइम पे आपको उसको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना चाहिए था, अगर आप वाकई में जगह होते जैसे आप बोल रहे हैं। क्या बयान दिया उसने, एक बार मुझे दोहराएंगे प्लीज? सर, उसका वीडियो आया, वीडियो हमने पूरा चलाया, जिसमें वो बता रहा है मैं जा रहा हूं, आओ हम वहां, मतलब पूरा वो क्लियर करने। बयान दिया सर, मैं वीडियो अभी आपको चला के दिखाता हूं ना। वीडियो जो बिट्टू बजरंगी का है, निकालिए। मैं प्रोड्यूसर को बोलता हूं निकालता हूं ना, 2 मिनट निकाल, लेट्स जस्ट पुल इट आउट नाउ। द थिंग इज, मैं आपको चला के दिखाता हूं पूरा वीडियो। ये 2 दिन पहले आया, मोनू मानेसर का बाकायदा वीडियो आया। बिट्टू बजरंगी जो कि मौके पे था, खुलेआम धमकी दे रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है। मेरा सवाल है, आपने उनको प्रिवेंटिव कस्टडी में क्यों नहीं लिया? आवाज नहीं आ रही है। मोनू मानेसर ने यह कहा कि देखिए, मैं मोनू मानेसर का प्रवक्ता नहीं, परंतु वो वीडियो जो मैंने देखा है उसमें वो ये कह रहा है कि एक धार्मिक यात्रा होगी जिसमें मैं भी जाऊंगा, आप भी आए। उसमें क्या किसी संप्रदाय के खिलाफ कुछ बोला गया है क्या? सर, अब तो ये तो अब नजरिए पे है, गोली पे गोली चलेगी, मतलब वो तो एकदम क्लियरली भड़काऊ टाइप का। और तो सर, इंसेंडियरी क्या होता है, भड़काऊ क्या होता है? राहुल जी, मेरा कहना है कि मोनू मानेसर, राहुल जी, हाँ, भड़काऊ क्या होता है? भड़काऊ ये होता है कि अगर कोई मेवात में आएगा उसको हम प्याज की तरह फोड़ देंगे। भड़काऊ ये होता है कि अगर आप इसमें सादत पा लेते हैं दंगों, इनको श्रद्धालुओं को मारने में, तो आपको जन्नत मिलेगी, और अगर किसी को मार देते हैं तो आपको सादत मिलेगी। भड़काऊ बयान ये होता है। ये कहना कि धार्मिक यात्रा में शामिल हुई है, ये भड़काऊ बयान कब से हो गया? सर, एक सेकंड, मैं ना इस वजह से नहीं चला रहा हूं क्योंकि वो वीडियो इतना भड़काऊ है। मैं चला सकता हूं उसका कुछ हिस्सा, लेकिन मैं पूरा वीडियो नहीं चलाना चाहता क्योंकि इट इज एन इंसेंडियरी वीडियो। मोनू मानेसर का बयान चलाइए। मैं आपको बिट्टू बजरंगी का बयान चला के दिखा रहा हूं। वो बोल रहा है आओ गोली पे गोली चलेगी। नहीं, मैं बिट्टू बजरंगी का बोल रहा हूं। वो बोल रहा है गोली पे गोली चलेगी, काऊ विजिलेंटे है, वहां पे उसके खिलाफ केसेस हैं, आपने इसको प्रिवेंटिव कस्टडी में लेना चाहिए था। आप अगर सोच रहे मैं क्यों नहीं चला रहा, क्योंकि उसमें भड़काऊ बातें, इसलिए मैं नहीं चला रहा हूं। इसलिए नहीं कि बस वीडियो नहीं है, पर मैं आपको चला के सुना के दिखा सकता हूं, और आपने भी सुना होगा। राहुल जी, मैंने मोनू मानेसर का, और फिर भी हम कहते हैं, मैंने तो आपको यह भी कहा कि मेवात के बाद भी अगर कोई आरोपी है जिसने कोई गुनाह किया, हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किएंगे। ये आपके बोलने से पहले मैं बोल रहा हूं। हमारी एफआईआर केवल नूह जिले में नहीं हुई, हमने पलवल में की, हमने फरीदाबाद में की, हमने गुरुग्राम में भी की, हमने रेवाड़ी में भी की। जहां भी हमें कोई ऐसा साक्ष्य मिला, चाहे वो किसी के भी खिलाफ मिला, संप्रदाय, जाति सबसे ऊपर उठकर हमारे लिए गुनाहगार होता है, उस पर सबने एफआईआर की। केवल हमने नूह में एफआईआर थोड़ी की है, नूह के बाहर भी लोगों को पकड़ के जेल में भेजा है। ओके,
Just one second, you know, मैं एक second बाइट चला के दिखाता हूँ जो बयान है. Just bear with me. I want to tell our viewers that we've just pulled out a part of the video. This is a it's been taken down now, and therefore I don't want to fall in the trap by playing out the video and ending up, you know, adding more fuel to fire. But I'll just play one excerpt to give you a flavor of whether this looks like a normal procession or it looks like someone who's setting up to, you know, do something slightly more sinister than just do a regular religious yatra. Here it is. और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे. अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही. फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा है ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं. ये सारे मुलाकात करने के लिए और 150 गाड़ियां फुल सिस्टम. जवाहर साहब, गोली पे गोली चलेगी, बाप तो बाप रहेगा, 150 गाड़ी. I could have just gone on and on, but that's not the point. अगर आपको ये भड़काऊ नहीं लग रहा, I leave this judgment to our viewers who are watching to decide whether they think this is bhadkau or not. And if this is not bhadkau, I don't know what is. Why was this video not taken down? Why was this man not arrested? आप इतना देखिए, मैंने फिर कहा, इसमें अगर वो ये कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई भी व्यक्ति हो, आप मुझे इस वीडियो तक ना रखे, कोई भी व्यक्ति हो जिसने कहीं भी गुनाह किया, दंगे भड़काने का काम किया, उस पर अपना कानून अपना काम करेगा. परंतु नहीं, अब आप घुमा रहे हैं. पहले आपने बोला वीडियो है नहीं, वीडियो है नहीं, आपने चैलेंज किया, मैंने वीडियो चला दिया. सुनिए, और मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रिवेंटिव कस्टडी में क्यों नहीं लिया, उसका आप क्या जवाब नहीं है? आपराधिक मामला क्या बनता है? अरे इस वीडियो में आपराधिक मामला क्या बनता है? सर, आपराधिक मामला ये बनता है कि अगर कोई समझदार पुलिस वाला हो, वो ये जानेगा कि बॉस इन लोगों की मंशा कुछ पंगा करने की है, दोनों तरफ से बिल्डअप हो रहा है. या तो हम लोग इस यात्रा को रोके या एक्स्ट्रा पुलिस वहां पे डिप्लॉय करें, क्योंकि वेरी क्लियरली वहां पे स्थिति खराब करने की दोनों तरफ से तैयारी चल रही थी. ये इसलिए तो प्रिवेंटिव कस्टडी क्या होती है? प्रिवेंटिव कस्टडी होती क्या है? प्रिवेंटिव कस्टडी में उसको लेते हैं जब आगे चल के कोई स्थिति खराब हो जाती. क्राइम कमिट होने का थोड़ी प्रिवेंटिव कस्टडी होती है. राहुल जी एक अंतिम लाइन बोलना चाहता हूं. आपने कहा कि दोनों तरफ से ऐसा हुआ. कोई एक दंगई किसी धार्मिक यात्रा के हथियार से मारा? आपके अनुसार कोई एक दंगई जिसने लोगों को मारा, कोई भी एक दंगई या कोई भी एक मेवात का व्यक्ति, क्या धार्मिक यात्रा में आप कह रहे हैं कि अवैध हथियार थे, उससे कोई मारा गया क्या? आप जमीनी रिपोर्ट ये भी पता कर लीजिए. अगर दूसरे पक्ष के पास हथियार होते, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसलिए और मेरी मजबूरी है, मैं ओएसडी होने के नाते कुछ चीजें बोल सकता हूं, कुछ नहीं बोल सकता हूं. पर आपकी इन्वेस्टिगेशन, जो आप कह रहे हैं कि आपने अच्छी इन्वेस्टिगेशन की, पहाड़ पर आप पहुंच गए जहां आपके अनुसार पुलिस नहीं पहुंची, तो क्या धार्मिक यात्रा में जैसा आपका आरोप है कि वहां दूसरे पक्ष के पास भी हथियार थे, नहीं, कौन से पक्ष के पास थी? मैं आपको दिखा देता हूं. लेट्स पुल आउट द वीडियो. वन सेकंड सर, वो जो धार्मिक हथियार में थे, कैमरे पे कैद है, गोलियां चला रहे हैं, उनके पास स्वॉर्ड्स हैं, उनके पास. पुलिस का कर्मचारी है? नहीं, पुलिस के कर्मचारी नहीं है सर. मैं आपको अभी तस्वीरें दिखा रहा हूं. अरे आप फिर से बोल, आपने बोला वीडियो नहीं है, मैंने वीडियो निकाल के चला दिया. अभी मैं आपको दिखाता हूं. सर, वो पुलिस के लोग नहीं है सर, वो हवा में गोली चला रहे, तलवारें चला रहे, वो पुलिस के लोग नहीं है सर, वो पुलिस के लोग नहीं है. जस्ट पुल आउट द वीडियो फ्रॉम डे वन. पुल आउट बालीज रिपोर्टाज फ्रॉम डे वन. ममता सिंह ने कहा है, जो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है, ममता सिंह ने यह कहा है कि जो नल्लन मंदिर में सिविल में गोलियां चला रहे, वो पुलिस का कर्मचारी. शुरुआती घंटे की मैं आपको फुटेज अभी दिखाता हूं लाइव. फिर से आप गलत साबित होंगे, दूसरी दफा आप गलत साबित होंगे. सर, मैं जो राहुल जी जो मैं जिस एविडेंस की मैं बात कर रहा हूं, आप पता नहीं कौन सी एविडेंस की बात कर रहे हैं ना, ये भी तो प्रॉब्लम है. गोली चला रहे हैं वो पुलिस.
वो पुलिस का कर्मचारी है। सर मैं आपको यात्रा के लोग दिखा रहा हूं जो यात्रा, ये अभी रुक जाइए, जस्ट वन सेकंड, ये नाउ लुक एट द फुटेज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। जवाहर जी आप भी देखिए, ये लोग जा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, ये भगवा पहना हुआ इन लोगों ने। नाउ दिस इज ऑल्सो द रियलिटी ऑफ द स्टोरी। तलवारें हैं इनके पास। भगवा पहनना गुनाह है क्या? नहीं सर, भगवा पहनना गलत नहीं है, वो गोली चला रहे हैं सर, भगवा पहनना गलत थोड़ी है। अरे वो गोलियां चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं। कोई एक दंगई मरा क्या उनका उससे? आप एक ही साइड की देख रहे हैं, ये तो विजुअल खुद ही अपनी स्थिति बता रहा है। वो ये देखो तलवार लेके खड़ा है, पत्थर फेंक रहा है। सर दोनों चीजें हो रही है ना, आप एक तरफ की देखते हैं दूसरी तरफ की नहीं देखते हैं, आप एक तरफ की देखते हैं दूसरी तरफ की नहीं देखते। ये देखिए बंदूक लेके घूम रहा है, ये भी बंदूक चला रहा है, ये कैमरे पे कैद है सर। उनके नेता का बयान सुनिए। आप फिर पॉलिटिक्स कर रहे हैं सर, पुलिस फोर्स। सर आप एक साइड क्यों ले रहे हैं जवाहर जी, आप एक साइड क्यों ले रहे हैं? ये कहा कि जो गन थी उनके हथियार। जवाहर जी पुलिस का काम है कि अगर दो लोग कुछ बदमाशी कर रहे हैं दोनों को पकड़ लीजिए। जिसने गलत कार्य किया राहुल जी दोनों को पकड़े हैं हमने। अगर किसी को गुड़गांव में पर एक ही साइड की बात कर रहे हैं, कंवल में पकड़ा है, रेवाड़ी में पकड़ा है, तो आप समुदाय ढूंढते हैं। मैं तो समुदाय नहीं ढूंढ रहा हूं, हम गुनाहगार ढूंढते हैं। सर आप कमाल की बात कर रहे हैं। हमने पहाड़ पे भेजे अपने खोजी पत्रकार, हमने बोला कि जिन लोगों ने पहाड़ से पत्थर फेंके, जिन्होंने बिल्डिंग से पत्थर फेंके, वो ये दंगाई है। हम उनके ठिकाने पे पहुंचे, आपकी पुलिस तो पहुंच नहीं पाई। आपने शुरू में बोला नहीं हम लोग नहीं पहुंच पाए, हम पहुंचेंगे। और आपकी पुलिस को जो काम करना चाहिए वो तो हम कर रहे हैं। पुलिस ने पकड़ा 100 अगर 176 लोग राहुल जी, अगर 176 लोग पुलिस ने जेल भेजे हैं, अरेस्ट किए हैं, तो वो गुनाहगारी पकड़े होंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई let me go across to Deepinder Huda as well। जवाहर जी आप रुकिए, ठीक है आपने कुछ किया, ये बात सही है। मैं बोल रहा हूं आपको बहुत और करने की जरूरत है। मैं ये भी कह रहा हूं कि जो भी हुआ दोनों तरफ से देखिए, एक तरफ की बैटिंग मत कीजिए। जो पहाड़ पे दंगाई है उनको भी हमने कैप्चर किया, जो सड़क पे दंगाई है उनको भी कैप्चर किया। दोनों दंगाई है, दोनों पत्थर फेंके, दोनों को इन्वेस्टिगेट कीजिए। मेरा सिंपल पॉइंट ये है। लेट्स गो अक्रॉस टू दीपेंद्र हुडा हु इज जॉइनिंग अस ऑन दिस ब्रॉडकास्ट। मिस्टर हुडा, फ्रॉम द करंट सिचुएशन वी हैव गॉट this blame game between the VHP, the Bajrang Dal, the Muslim side saying that, you know, blaming the other for starting this violence. Your family has run Haryana for a long time. Where do you think the situation went out of control? Who is to blame in your view? See, first of all, Rahul, what has happened in Haryana is really unfortunate and most painful for all the Haryanvis to see, because Haryana has never had such an atmosphere or never had a history of such incidents in the past. In fact, this region remained largely peaceful even during the turbulent years of partition. This Mewat region had remained largely peaceful even then. So it's really unfortunate and very painful. At the same time, it was an incident which was completely avoidable. This is a result of complete government failure. Government is to be blamed. When such a procession was to take place, at least the least preventive measures that the government could have taken was to provide adequate police deployment. The government failed to do so. If adequate police deployment had taken place, it would have stopped the confrontation between the two communities and the two groups. Unfortunately, the government failed completely and government has no answers. Okay. All that the Chief Minister and our Home Minister are saying now is that it was a pre-planned conspiracy. Well, if it was a pre-planned conspiracy, then what were you doing about it? There are only two possibilities. A, either you were not aware of anything pre-planned, then what was your CID department doing? Or B, if the government was aware about it, then what was your police department doing? What were you sitting on such information? Because a lot of TV channels have done certain... Okay, no, but you would have seen this India Today investigation which shows that the CID gave information to the Haryana government and police 8 to 10 days in advance, warning of the potential of conflict during this yatra, and yet it seems that adequate protection wasn't made. But what we're hearing from the BJP is, they say they did whatever they could and yet the situation went out of control. They're claiming they put extra policemen on the ground. Absolutely. So now that is what your channel is showing, and
that is also what is the common knowledge in the region, that the intelligence officers had passed on the information. But in Haryana, you'll be surprised that for the first time that the police department and the CID department are reporting to two different ministers. Usually CID and police department are always with the home minister, but because of some internal politics, CID department now rests with the chief minister for the first time in Haryana's history, and I don't think is any other state also as an example, and police is with Mr. Vij. So if CID department provided that intelligence input that there was something going to happen 10 days back, then where was that input lost? Was it with the chief minister's office or the home minister's office? So that's a question. No, that's a very important question. I'm out of time. Dipinder Hooda, thank you very much for joining us. Jawahar Yadav has his hand up. मेरा सर टाइम खत्म हो गया है शो का, इसलिए नहीं कि मैं आपको बोलने नहीं देना चाहता, लेकिन वक्त खत्म हो गया, तो बहुत जल्दी एंड में बताइए कि इसके बाद आप क्या करेंगे, बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नहीं, पहले मैं दीपेंद्र भाई का जवाब दे दूं। जिन्होंने सांप्रदायिक हिंसा फैलाई, अपने विधायकों के लिए कुछ नहीं बोला। नंबर एक, अशोक गहलोत जी ने आरोप लगाया कि मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए जब राजस्थान पुलिस गई तो हमने उस पर एफआईआर कर दी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसका समर्थन किया। उन्होंने एक गर्भवती महिला को इतना मारा कि उसके पेट में बच्चे की हत्या हो गई। भिवानी के एक बच्चे की हत्या हो जाती है और राजनीति के चक्कर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अशोक गहलोत के साथ खड़े हो जाते हैं। Okay, let me put that question to Deepinder Hooda. Okay, one second, let me put that question, sir. ये मोनू मानेसर की बार-बार बात हो रही है. The question is, I was looking at the investigation in Rajasthan. Monu Manesar hasn't been charged. He's not on that list of absconders in the lynching case in Rajasthan. If he is as big a goon and you're as convinced you have a case against him, your police in Rajasthan, which reports to the Ashok Gehlot government, should have gone and arrested him. You didn't do that either, sir. See, I am not aware of the details of the case and the situation as far as that case is concerned. But irrespective of any state government, whether Haryana or Rajasthan, if there is a person who's absconding from a wanted situation, facing a certain grave charges, then the respective police, be it Rajasthan or Haryana, has to answer for it. Okay, no one's coming out smelling of roses in this matter. The fact very clearly is there's been a riot. There were stones flung from both sides. Who started the riot is a matter that needs to be probed. But regardless, when there is such a build-up, the police should have deployed more personnel. And this aspect of an India Today team of investigative reporters ending up in the hideout of the rioters, very close to where this riot took place, up on the hills, caught on camera, it's caught on open camera, it's caught on drone camera, it's caught on sting camera. And yet the Haryana police hasn't got there. Please wake up, get into the act, because all of India is watching. We will continue tracking the story very closely. Rajdeep Sardesai comes up next with News Today. Communal flashpoint at Delhi's doorstep. Amidst the flames and rioting, India Today reporters fearless on the ground. Stone pelting was so aggressive from the both sides. Entire market in the area has been shut right now. Attacked the cyber police station of Noor. Facts, questions, What resulted in the communal clashes? and first-hand reports. एकदम ही पत्थर आए हैं ऊपर से छतों पे से गोली तक चली है, पीछे वाला शीशा टूट लिया। 100% accuracy amidst the blaze. We track the face of every story. India Today. India United. Apple iPhone 15 series will most likely launch in the month of September, but buyers may be in for a shock. The prices may go up substantially, especially for the Pro models. Barclays analyst Tim Long says iPhone 15 Pro will be $100 more expensive compared to the iPhone 14 Pro, and the Pro Max model will be a full $200 more expensive. He says the starting price of the normal Pro model will be around $1,100, whereas
The Pro Max model will start at almost $1,300. So in India, Danny, will the iPhone finally breach the 2 lakh rupee price point? So let's do a little math here to understand that. The current most expensive iPhone in the country, which is the iPhone 14 Pro Max 1 TB model, sells for around rupees 1,89,900, which is roughly around $2,300. And at the same time, the model in US costs just $1,500 plus taxes. So if we just add $200 to the total price in India for the iPhone 15 Pro Max, it comes down to $2,500, which is a whopping 2,05,000. Sorry to be the bearer of bad news, but the next generation iPhones could easily breach the 2 lakh mark. International funds are a relatively new segment that we've seen flourishing very well in India. How do you see their growth over a period of time, and why is it that initially we have international funds that are focused mainly on the US markets? Of course, newer ones are looking at the Asian geography too. Yeah, I think the thesis comes from portfolio theory. I think if you look at most investors outside of India, so if you look at investors in the UK or the US or even Southeast Asia, you'll see that a lot of their portfolio is devoted towards companies and stocks outside their home country. And I think in India this was not the case, but I think today people have realized that a part of your portfolio should be exposed towards. Co-presented by Star Health Insurance, the health insurance specialist. Co-presented by JK Tyre Ranger Series, stay wild at heart. Co-powered by the new Kia Seltos, the badass reborn. Co-powered by Sera, this is your space, play it your way. Good evening, hello and welcome. You're with the news today. This is your primetime destination, news, newsmakers, talking points. The big talking point tonight, who lit the fire in Haryana? That's right, as Nu continues to remain tense, that's the big question we'll raise.